Hello friend, welcome back to my channel Virus Smart Hacking. Disclaimer. This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. Flow the command and see my blog virusmarthacking.blogspot.com. Flow my social media apps link in description. What is darknet? In English, darknet is an overlay network that can only be accessed using specific software, configurations, or authorization. It is part of the deep web because its contents are not accessible through search engines, but it is something more. It is anonymous. It hosts anonymous websites. Yeah, you wouldn't know who the owner is unless he explicitly reveal his information. It offers full anonymity to users too. Darknet anonymity is usually achieved using an onion network. I am sure you have cut an onion once in your lifetime and you had been crazy about the number of layers it has. Same happens when you use an onion network. There are numbers of encryption layers that hide your true identity. डार्कनेट क्या है? इन हिंदी, डार्कनेट एक ओवरले नेटवर्क है जो केवल हो सकता है विशिष्ट सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन या का उपयोग करके पहुंचा प्राधिकरण। यह डीप वेब का हिस्सा है क्योंकि इसकी सामग्री है खोज इंजन के माध्यम से सुलभ नहीं है। लेकिन यह कुछ ज़्यादा है, यह गुमनाम है। यह अनाम वेबसाइटों को होस्ट करता है। हाँ, आपको नहीं पता होगा कि मालिक कौन है जब तक कि वह स्पष्ट रूप से उसका खुलासा नहीं करता है जानकारी। यह पूर्ण गुमनामी प्रदान करता है उपयोगकर्ताओं को भी। डार्कनेट गुमनामी है आमतौर पर एक प्याज का उपयोग करके हासिल किया नेटवर्क। मुझे यकीन है कि आपने काट दिया है एक बार अपने में एक प्याज। जीवन भर और तुम पागल हो गए थे परतों की संख्या के बारे में है, वही जब होता है आप एक प्याज नेटवर्क का उपयोग करते हैं। एन्क्रिप्शन के नंबर हैं सच्ची पहचान छिपाने वाली परतें। Use of darknet. Okay, so you have grasped what darknet is. Now you may ask me, why should you use it? Well, the reason could be any of them: to better protect the privacy right of citizens from targeted and mass surveillance, whistleblowing and news leaks, hacking and computer crime. Maybe you may want to chat with the most dangerous of hackers. Sale of restricted goods. File sharing. डार्कनेट का उपयोग, ठीक है, तो आप समझ गए हैं कि डार्कनेट क्या है। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको इसका उपयोग क्यों करना चाहिए। खैर, इसका कारण उनमें से कोई भी हो सकता है। नागरिकों की निजता के अधिकार की बेहतर रक्षा करना, लक्षित और बड़े पैमाने पर निगरानी, व्हिस्लब्लोइंग और न्यूज लीक, हैकिंग और कंप्यूटर अपराध। हो सकता है आप कर सकते हैं हैकर्स के सबसे खतरनाक के साथ चैट करना चाहते हैं, प्रतिबंधित सामानों की बिक्री, फाइल साझा करना,